I'll do it. I hope I'm audible to all. All my brothers and sisters who are present here, the fourth pillar of democracy, that is the media. It's an honor and a privilege to be present before you to address this important press conference at a time when people of Karnataka, the Kannadigas, are waiting to give a historic mandate to the Bharatiya Janata Party. Thank you for coming. I will be addressing this press conference in English and Hindi. I hope all of you are comfortable with English and Hindi. Thank you. So that's why I knew that it's better that I address it in both languages. Endeavor would be to set forward the positive agenda of the Bharatiya Janata Party and the double engine ki sarkar. First and foremost, the state of Karnataka has always led from the front and has contributed to the prosperity and progress of our great nation, India. The Bharatiya Janata Party has been blessed by the people of Karnataka because it has a vision for the state. The double engine ki sarkar, when we use this term double engine ki sarkar, it must be made very clear that on one side, the Bharatiya Janata Party offers double engine ki sarkar. On the other side, the Congress has trouble engine ki party. Double engine versus trouble engine. And Shri Narendra Modi ji, who is one of the tallest leaders, not in India alone, but in the world today, has a vision for the country and has a vision for the state of Karnataka. That vision has been very ably implemented by the Chief Minister of the state, Basavaraj Bommai ji. This is very important because all of you very well aware, just a few days back, Shri Narendra Modi ji, when he was visiting one of the states which has an opposition party government, had stated that the central government wants to develop the state, but the kind of cooperation that is required by the state government doesn't come forth. The reason is simple. There is petty politics. There is politics that credit किसको मिलेगा. जब हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक दूरदर्शी सोच है कर्नाटका के लिए, कन्नडिगास के लिए, उसको धरातल पर, जमीन पर उतार कर किस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मूल मंत्र करके दिखाना है, ये तभी संभव है जब डबल इंजन की सरकार. और ये कहना गलत नहीं होगा, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का यही सपना है कि बढ़ते भारत में एक अहम भूमिका, अग्रणी भूमिका कोई निभाए, तो वो कर्नाटका और जो हमारे यहाँ पे भाई बहन हैं वो लोग निभाए. दूसरी तरफ सी फॉर कांग्रेस तो है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा, सी केओस के लिए भी है, कंफ्यूजन के लिए भी है. तो एक तरफ क्लैरिटी है, दूसरी तरफ केओस और कंफ्यूजन है. और
सी फॉर करप्शन भी है, क्योंकि भ्रष्टाचार की कोई जननी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि देश में ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो पिछले कुछ माह में 8 बार कर्नाटका की धरती पर आए हैं, और केवल इसलिए नहीं आए हैं कि जैसा कांग्रेस सरकार में होता था कि झूठे वादे किए और फिर यहाँ पे जो हमारे नागरिक भाई बहन हैं उनका हित भूल गए, व्यस्त हो गए, उनकी अनदेखी कर दी। ये गर्व की बात है कि अगर शिलान्यास होता है तो जो भी प्रोजेक्ट हो उसको पूरी तरह से खत्म करके देश की सेवा और कर्नाटका के जो नागरिक हैं उनकी सेवा में अर्पित कर दिया जाता है। ये एक बड़ी बात है। सपना कोई भी देख सकता है, लेकिन सपना देख के उसको पूरा करना अगर कोई कर सकता है तो वो डबल इंजन की सरकार है। और मैं समझता हूं कि जब नागरिकों का हित आए तो हम सबको ये भूल जाना चाहिए कि उसमें निजी स्वार्थ क्या है। हमें केवल और केवल एक लक्ष्य रखना है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, प्रदेश के नागरिकों का हित सर्वोपरि है। दल का हित, स्वयं का हित, ये बहुत बाद में आता है। यही सीख भारतीय जनता पार्टी ने हमें दी है। जब मैं बात करता हूं उपलब्धियों की, तो डबल इंजन की सरकार ऐसे ही नहीं कहा जाता है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। जो किसान भाई हैं उनको अगर सालाना 6,000 रुपए केंद्र सरकार दे रही है तो 4,000 रुपए हमारे प्रदेश की सरकार दे रही है। ये डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। और संक्षिप्त में ये विकास कार्य वो हैं जिनसे अगर शुरुआत ना करूं और इनको आपके समक्ष ना रखूं, if I don't mention these various schemes that have been introduced to empower the citizen, and the mantra again is appeasement for none, empowerment for all. And these are state specific numbers that I am giving you within a minute, and then I will go to the main issues that I have to address. Under the Swachh Bharat mission, 48 lakh toilets have been created. Now 48 lakh toilets are not just brick, mortar and wall. These are relatable to the dignity of our sisters, women of the state. Because nobody ever thought about the dignity of a woman when she steps out of the house to answer the nature's call. This is the sensitivity that is required, and it is only there, and I proudly say it with all the leaders sitting here, in the vision of the Bharatiya Janata Party. Adding to that, 75 years of independence, households didn't even have the basic amenity of pure drinking water. And I am so proud to tell you that clean drinking water under the Jal Jeevan mission has been provided to 1 crore 1 lakh households. How it would transform the lives of the citizens. With that, 7 lakh houses that have been made or sanctioned in the state of Karnataka, 32 lakh gas cylinders. Health is another area nobody ever thought. What about the poor and the marginalized? Say if there is a serious disease for a person, where does he go for treatment, effective treatment? And then came the Ayushman Bharat, under which 15 lakh beneficiaries have been provided treatment at a cost of 1350 crores.
This is just a summary, and I know these numbers are available to you, and therefore I would not prolong it. But I thought it is my duty to first start with the positive. It is very easy to criticize everything that is being done. The pessimistic naysayers attitude that the Congress party and the JDS has. It is very difficult to ensure that you see a dream and then it fructifies and it changes and empowers the life of every citizen. And that is why these numbers I thought were very important. Now, I'm coming to something that defines the Bharatiya Janata Party. If you were to ask me, the soul of our party organization, I would say national security, national interest. Interest of the citizen first, always. There is no exception to that. Everything else can wait. Safety of the citizens, national security cannot be sacrificed for smaller means, vote bank politics. And this brings me to the topic of PFI SDPI. And every word that I speak today, I speak with some responsibility as the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party, but more so as a citizen of the country. Because these are questions that people of Karnataka and every citizen of the country has asked and has remained unanswered. And I know if this vice of appeasement for the sake of some votes has affected any area, then this is the area where it has affected the most. People say Popular Front of India. Indians believe Parasite Front of India. And parasite is used for a reason. When you get everything, your identity, your growth from our country, from the pure land of the state of Karnataka, yet the sins you commit destroy the spirit of the constitution. These questions have to be asked to every political outfit that has a connection with the PFI, SDPI and the SDPI itself. We have no qualms in saying that we take a lot of pride in the fact that appeasement politics, like a termite, was eating the society. And yes, we are proud of the fact that Bharatiya Janata Party has always spoken about empowerment for all, but yet, whenever the Congress or the JDS or the SDPI have tried to violate the honor of the Hindu community, it is the Bharatiya Janata Party which has stood tall, and we take pride in that. Is it not correct? I remember during 2018, just for the sake of few votes, Shri Siddaramaiah ji, who was the then Chief Minister, he compromised national security and he compromised with the oath that he took under the Constitution of India. The oath of ensuring the safety of every citizen of Karnataka. It was a sad day for the state of Karnataka when around 1,700 cases of members of the PFI, SDPI were withdrawn by him just before the elections, only because the Congress party thought it would give them some electoral benefit. Now contrast this. Contrast this with what the Bharatiya Janata Party has done. A senior leader of the Congress party, and this question must be posed to Siddaramaiah ji, to DK Shiv Kumar ji,
That is it not correct? K.C. Venugopal ji, who is a senior leader in the Congress, last that I checked, he was against banning of PFI. And look at the empowerment and the duty to do what is right under the Constitution. Shri Narendra Modi ji's government at the center, Shri Amit Shah ji as the Home Minister, took the tough decision and banned the PFI. I am contrasting these two to show that on one side is the Bharatiya Janata Party, only concerned about the citizenry, about national interest, about maintaining law and order in the state. On the other side, compromises are made, keeping in mind a few votes, few seats, the lust for power that the Congress has. Rahul Gandhi is one leader the Congress party believes has the birthright to rule the Congress. And when I talk about PFI, I must also say, when a person who had links with the PFI, Siddiqui Kappan, he was arrested. Rahul Gandhi was not standing with the nation. He met the family members of Siddiqui Kappan when his application before the Honorable Supreme Court and the High Court was getting rejected even for bail. 2.5 years, he was behind bars. Rahul Gandhi, is this your priority? Safety of the citizens is not your priority and the Congress party's priority. And therefore, I would definitely say that Rudresh was brutally murdered. I've been told 40 years old. Prashant Pujari, 28-year-old, our brother, just like us, he had dreams too. He wanted to serve the country and Karnataka as well. Sharad Madiwal, 30-year-old. Deepak Rao, 34-year-old. Kutappa. These are few names that I have given, and there is a reason. When these people were brutally murdered, allegedly by members of the PFI SDPI, what about the right of the family members to get justice? Why were the terror cases withdrawn? Is there any answer? You can indulge in appeasement politics, only talk about one particular religion. But I am talking about a constitutional right here, being a lawyer myself. What about the right of the family members who lost their loved ones to get justice? Cases were withdrawn when I have been told that the confidence of the police was bulldozed, and the police under Siddaramaiah ji kept on saying, we have evidence, we have witnesses. But Siddaramaiah ji only wanted at that time few votes, few seats, not caring about the citizens, and decided to withdraw the cases. And therefore, these names should always remain fresh in our memory. These are lessons to be learned. And we have this firm belief that people of Karnataka, the Kannadigas, they believe in the positive environment of peace and tranquility, where every person coexists with the other one. Nobody is treated as a second-rate citizen. And that is why this issue is a very vital one. And BJP and the double engine ki sarkar is the only party that can give a guarantee
of a safe environment, of strong law and order, and an environment of progress and development. The second issue that I wish to raise here, we have all heard guarantee, guarantee, guarantee. बार बार कहते हैं गारंटी। हम पूछना चाहते हैं, आपकी गारंटी केवल एक है, ये पूरा भारत जानता है, कर्नाटका जानता है। अगर कांग्रेस कोई गारंटी देगी तो उसमें घोटाला होगा, उसमें भ्रष्टाचार होगा, वंशवाद होगा, अपना हित साधना होगा। और इसलिए कहता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। और जब हम यहां बैठते हैं, जो भी वक्तव्य देंगे, एनी स्टेटमेंट दैट वी मेक will be backed by facts. These are issues that are being talked about by the people of Karnataka. You can't give good governance. You don't have a vision for the future. You don't think about the exchequer. You make false promises because you know during elections we will get a few extra votes. Results आ जाएंगे, उसके बाद वादों का क्या है? वादे करे थे, भूल गए। लेकिन ये बता दे, वैसे आप अगले 20 साल भी कभी आएंगे नहीं, ना केंद्र में ना यहाँ पे। और उसका वजह जो है मैं आपको बता दूं। छत्तीसगढ़ की पहले बात करते हैं। सरकार वहाँ पे घोटालेबाज कांग्रेस की ही है। पवित्र माँ गंगा, द गंगा वाटर, होली वाटर, आई रिमेंबर फ्रॉम द कांग्रेस हेडक्वार्टर अपने हाथ में गंगा जल लेके कसम खाई थी। राहुल गांधी भी एक रैली कर रहे थे वहां, तारीख जो मेरे पास है नवंबर 2018 की बात है। हम वचन देते हैं कि 10 दिन में सारे किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। नवंबर 2018 राहुल गांधी की रैली। राहुल गांधी, हम वचन देते हैं 10 दिन में सारे किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। पहला सवाल, क्या माफ कर दिया था? नहीं। अब चलते हैं राजस्थान में। कल ही की खबर है और बड़ी खबर है। इन अ नेशनल पर्सपेक्टिव ऑल्सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। व्हाट वी आर सेइंग, दे में से ऑपोजिशन पार्टी है, भाई यहां पे रूलिंग पार्टी है, हम ऑपोजिशन में है, इसलिए हम पे आरोप लगाती है। सचिन पायलट डिप्टी सीएम रहे हैं राजस्थान के। डिप्टी सीएम कौन बनाता है? सीएम बनाता है। कांग्रेस में गांधी परिवार बनाता है। जो डिप्टी सीएम रहे हैं, उन्होंने जो कल कहा है, उन्होंने आरोप लगाया है अशोक गहलोत पे, और उसके बाद बोला है कि मैंने चिट्ठी पे चिट्ठी लिखी। अशोक गहलोत जी, हम लोग चुनाव के दौरान जो वादे कर रहे हैं वो पूरे नहीं हुए हैं, जनता के बीच में कैसे जाएंगे? अशोक गहलोत जी ने कहा नहीं, कोई उत्तर नहीं दिया। अशोक गहलोत जी को लग रहा होगा चुनाव अभी दूर है, नए वादे करेंगे। और मैं पढ़ना चाहता हूं जो उनका वक्तव्य था, क्रेडिबल मीडिया एजेंसी के थ्रू ही मैं पढ़ रहा हूं। राजस्थान, I wrote a letter to CM Ashok Gehlot and said that elections are coming and we must show the public that there is no difference between our promises and our work. But I have not received any answer from the CM yet. Sachin Pilot, Congress MLA. देखिए, मतलब वहां जो वादे किए थे, लगभग 4.5 साल हो गए, वहां पूरे नहीं किए। वही झूठे वादे यहां पे जनता को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। क्या लोग सवाल नहीं पूछेंगे? क्या सबको अपने लीडर की तरह समझा है? बुद्धिमान नागरिक होते हैं, पूरा हिसाब किताब मांगते हैं। किसानों का जो कर्ज था वो माफ नहीं किया। लेकिन अब मैं जो प्रमाण आपको दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
अगर आप कहेंगे इंग्लिश में हिंदी में दोनों में बोल दूंगा। फ्लो बना है, इंग्लिश में बोलते हैं पहले, हिंदी में बोलते क्योंकि हिंदी में ये है। ये मैं प्रमाण लेके आया हूं, देखिए मेरे हाथ में है। राजस्थान असेंबली में एक प्रश्न पूछा, सतीश पुनिया जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने किसानों से लेके ये प्रश्न पूछा और ये देखिए मेरे हाथ में है, आप कहेंगे इसकी कॉपी आपको सप्लाई कर दूंगा। लेकिन ये गुजारिश जरूर है कि जहां भी डी.के. शिव कुमार जी मिले, जहां भी सिद्धारमैया जी मिले, राहुल गांधी कभी आए यहाँ पे, और अगर अशोक गहलोत सामने आ जाओ, उनसे ये सवाल जरूर पूछिएगा। सवाल क्या है और ये विधानसभा में जो उत्तर मिला है वो मैं बता रहा हूं। क्या ये सही है कि हाल ही में किसानों की जमीन ऋण नहीं चुकाए जाने के कारण कुर्की की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी? पहला प्रश्न। यदि हां तो प्रदेश के किस किस जिले के कितने किसानों की जमीन कुर्की आदेश जारी किए गए हैं? यदि हां तो विवरण सदन की मेज पर रखें। अब उत्तर क्या आता है ये बहुत जरूरी है, सुनिए। रोटा एक्ट 1974 के तहत प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋणी किसानों द्वारा ऋण नहीं चुकाने के कारण उनकी कृषि भूमि की कुर्की नीलामी की जाती है। नीलामी हो जाती है, कर्जा माफ नहीं होता। और आगे जो है वो सुनिए। प्रदेश में जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक कर्ज नहीं चुका पाने के कारण किसानों की जमीन कुर्क नीलाम करने के 22,215 प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिसमें 18,817 प्रकरणों में नोटिस दिया जाकर जमीनें कुर्क कर दी गई हैं। कर्जा माफ करना था, मैनिफेस्टो में था। किसानों की जमीन कुर्क कर दी, अरेस्ट के वारंट निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों की गारंटी क्या है? क्या ये सवाल कोई उनके समक्ष रख के पूछेगा? गारंटी दी है, ये गारंटी पूरी नहीं हुई। मैंने आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बताया, राजस्थान में उन्होंने ये भी कहा था कि जो युवा हैं उनको हम अगर रोजगार नहीं दे पाएंगे तो भत्ता देंगे, 3500 रुपए हर माह, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। क्या ये मिल गया है? ये सवाल जरूर पूछिएगा। और अंत इसी बात पे एक और कर दें, हिमाचल प्रदेश के चुनाव अभी अभी हुए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में इन्होंने कहा महंगाई एक मुद्दा है, और वहां सरकार बनने के 10 दिन बाद ही 3 रुपए वैट डीजल पे बढ़ा दिया। वहां की जनता भी आक्रोशित है। ये जो 4 उदाहरण मैंने दिए हैं, ये केवल एक बात दिखाने के लिए दिए हैं। कांग्रेस पार्टी की एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है धोखाधड़ी करने की, परिवारवाद में विश्वास करने की, तुष्टीकरण की राजनीति करने की। और इसीलिए हमारा ये मानना है कि जब नतीजे आएंगे विधानसभा चुनाव के कर्नाटका में, ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। पुनः कमल खिलेगा और जो विकास की धारा बह रही है उसको और आगे हम लोग लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ प्लीज। एक्सप्लेनेशन इसमें आवश्यकता नहीं है। आप अगर कोई उद्देश्य से एक टारगेटेड लोगों के लिए एक टाइम फ्रेम विशेष में उनके सशक्तिकरण के लिए कुछ लाते हैं, वो अलग बात है। और जब आप केवल मैनिफेस्टो में किसी चीज़ को बताते हैं कि हम पूरा करेंगे, और चुनाव के परिणाम आने के बाद खासकर जब आपकी सरकार जैसे बनी और भूल जाते हैं, तो ये गारंटी नहीं है। दिस इज कॉल्ड चीटिंग। और इसीलिए जब हम आपके बीच में आते हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको
कुछ तथ्य, कुछ साक्ष्य, कुछ प्रमाण दें। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जैसे सिद्धारमैया जी और शिव कुमार जी कुछ भी कह दें। मैं जो भी लेके आया हूँ वो तथ्यों के आधार पे कह रहा हूँ, और जो हम लोगों ने जनता में जाके बात करी है, तो ये सवाल जनता के सवाल हैं, और इसीलिए अगर आप जनता के साथ छल करेंगे, जनता को ठगेंगे, तो जनता कभी माफ नहीं करेगी। Sir, you said Congress has not fulfilled the promises in Rajasthan and other states. Your government at the center and the state came to power by raising the issue of inflation and prices of LPG and other essential commodities. Right. But under double engine government, the prices of LPG has doubled. Even the essential products prices has doubled. Right. How do you respond? I would respond in two parts. First of all, when you talk about inflation, I must very humbly submit to you, please check the numbers. During the Congress regime, inflation was at double digit, and it crossed 12 and 13%. And we can proudly say, and I say this with some authority, and you may check the numbers, from 2014 till now, the average inflation rate has been around 4 to 5%. And that too when the entire globe witnessed the pandemic, COVID. Even during such tough time, the inflation never went out of control. Measures were taken by the RBI of increasing the repo rate, and the inflation has been tamed. So when you say that inflation has risen, if it was 3.5 to 4.5% for the first 7 to 7.5 years, and it was a little higher during the COVID pandemic, yes, it did rise, but corrective measures were taken. And we must also not forget the net growth rate of India under the Modi government has been positive. The growth rate, and if you minus the inflation from that, it has always been positive. Whereas during the UPA era, there have been many years when inflation was in double digit and the GDP of the country was not growing at that pace. There was a negative growth. This an economist would know, and I'm sure you also know. So I am only trying to tell you on the numbers of inflation that the BJP government has always worked hard to ensure that the common man does not have to take the burden of rising prices. And there is one more data that I will try to dig out about the gas cylinders that you are saying. In January 2014, if I remember correctly, the gas cylinder rate was the highest ever, and you may check that. After that, our government ensured that more than 9.5 crore gas cylinders reach households, empower the women. A scheme of this magnitude was never there in any previous government. And I will share those numbers also if I find those. But these numbers which I have shared are all correct and may be verified. Yes. Yes. One by one, please. Yes, please. You told about how big is BJP leadership, and still the candidates list is being tracked. Right. Still it is not announced. So don't you think it is a hindrance to the party? I will answer that. Thank you for asking me that question, because a lot of media people have been asking that. One has to understand the structure of the parties. Bharatiya Janata Party is a very structured party. We have multiple layers where feedback is taken from the workers, the leaders. It ultimately goes to the Central Election Committee and the Parliamentary Board, which takes a call. And as I am addressing this press conference, a meeting was held by
the leaders of the party, and the list will be declared very soon. And I must say, Shri Yediyurappa ji also today, when I was coming here for the press conference, has very clearly stated that it is only a matter of time. But I must also say that just because the list is released early doesn't mean the candidates are there to serve the people of Karnataka. Where there is a family fiefdom, where only a parivar has to decide without taking into consideration what the cadre of the party wants, lists are released, but the outcome is that election after election, the Congress party has not only lost the election, but they have been decimated. And the people of Karnataka know that Bharatiya Janata Party is a party with a difference, and Congress party is party with differences. And that is why it is a unique formula that the Congress party is adopting, that two tall leaders of the Congress party are fighting for chair even before the results are announced. And there is a third umpire, which we generally see in a cricket match, who is here just to ensure that they don't fight amongst themselves. Thank you. Any other question? देखिए, फिर से मैं धन्यवाद दूंगा, आप ये अवसर मुझे दे रहे हैं कि मैं ये उत्तर दे पाऊँ। ये गलती कांग्रेस पार्टी की नहीं है, उनके डीएनए में विभाजित करना, तोड़ना, नफरत फैलाना, ये है। मैं पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नंदिनी हमारा स्वाभिमान है, नंदिनी कर्नाटका का स्वाभिमान है। और अगर थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लेते कांग्रेस वाले तो इस तरह की टिप्पणी ना करते। मैं वो आंकड़े लेके आया हूं और आप इसको, आपसे मेरी यही विनती रहेगी, लिख के और इसको कल जरूर छापिएगा और पूछिएगा कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस की सरकार में 2018-19 का आंकड़ा दे रहा हूं, टोटल टर्नओवर 14,500 करोड़ था। 2021-22 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में टर्नओवर 25,000 करोड़ हो गया। एक तरफ 14,500 करोड़, एक तरफ 25,000 करोड़। टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मिल्क प्रोक्योर्ड पर डे 66 LLPD, और हमारे समय में जो उनके टाइम पे 66.32 है, ये 82.4, मतलब आप देखिए करीब 30% ज्यादा है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है किस तरह से जो यहां पे चाहे नंदिनी हो, चाहे यहां के नागरिक हो, उनका जो हित है उसको ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लिए जाते हैं। और ये जो बिना तथ्यों के केवल और केवल बयानबाजी कर देना, हल्की बात कर देना, यही आज कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। इस पूरी प्रेस वार्ता में मैंने अगर कोई भी तथ्य रखा है आपके समक्ष, तो ये प्रयास रहा है कि वो तथ्यों के आधार पे हो, और जनता यही जानना चाहती है। आपको कोई नहीं रोकता है आप कहें कि ये आरोप हम लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, कोई परेशानी नहीं। उसका कोई आधार होगा या केवल नफरत फैलाओगे राहुल गांधी की तरह? उनका आरोप जरूरी नहीं है। मैंने आपको एक बात कही, मैं पुनः बोलता हूं, नंदिनी हमारा स्वाभिमान है, कर्नाटका की अस्मिता है, और ऐसा कोई भी निर्णय ना हमने पहले लिया है ना आगे लेंगे जिससे कि जो यहाँ के लोगों का हित है उसमें सेंध लगे। इससे ज्यादा स्पष्ट जवाब और तथ्यों के साथ मैं देने में सक्षम नहीं हूं। धन्यवाद। एनी अदर क्वेश्चन?
लेट हो रहा है, हाँ जी। उसमें ऑपरेशन कमल का भी कुछ प्रयास हो रहा है। देखिए, मुझे आपको बताना पड़ेगा। आप कह रहे हो ऑपरेशन कमल, हम लोग तो ये मानते हैं डबल इंजन की सरकार, और जब ये इंजन चलता है तो वहाँ कांग्रेस पार्टी में कुछ टूटे डिब्बे पड़े हैं, वो खड़खड़ से केवल आवाज़ करते हैं, काम के किसी के नहीं है। मैंने आपको बताया, एक संगठन है, यहाँ अनुशासन है, सबसे बातचीत करके निर्णय लेके हम लोग कैंडिडेट की सूची निकालेंगे, और डंके की चोट पे कह रहा हूँ, पुनः कमल खिलेगा कर्नाटका में, और डबल इंजन की सरकार आएगी, जिसमें दम हो वो रोक के दिखा दे। धन्यवाद। कैन यू रिपीट प्लीज? आई एम सॉरी, आई मिस दैट। Ma'am, that is, I would say, also an aspect that you have to see the other way. I will answer your question as well. I will not evade any question. It's my duty. बेचारी टूटी फूटी कांग्रेस, बिखरी हुई कांग्रेस, बिना किसी विचारधारा की कांग्रेस, लीडर आपस में लड़ रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं। राहुल गांधी उनके लीडर तो आने से डर रहे हैं, और पता है कि कल नागराज छब्बी जी, जो कि कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने ये पाया कि जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, यही देश और कर्नाटका को आगे लेके जाएगी। ये जो झटका है, क्या कांग्रेस पार्टी सह पाएगी? पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको ये बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, ये बात सच है कि दूसरी पार्टी के जो नेता होते हैं, वर्कर्स होते हैं, हमारी पार्टी में आते हैं, लेकिन ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा आपके पास। हमारे कमल के नीचे जो आता है वो इस विचारधारा से ही चलता है, जो अनुशासन पार्टी का है वो उसी से चलता है। सोच अगर है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है तो ये मानना पड़ेगा, और जो नहीं मानता है, हमारी पार्टी में उस व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। लास्ट क्वेश्चन। That the central government banned only EFI, leaving the SDPA. It is only to divide the votes. What's your take on that? I would only say Mr. Siddharamaiah should be the last person talking on the PFI. The facts that I have placed before you, he's played with the lives of the 1700 families that I am talking about. I am talking about all the Kannadigas. They are asking this question. I want to know from Mr. Siddharamaiah, why did you withdraw cases? What was your compulsion that you violated the oath of the Constitution that you took to preserve the ethos of the Constitution? He was the Chief Minister to ensure proper law and order. When the names that I have taken of Rudresh and others, these people were targeted because their only mistake was their ideology was different from the ideology of the ruling dispensation. And even if the ideology was different, so what? You were to protect these people. You failed. Your second duty was to ensure justice to the family members of all these people who were brutally murdered. You yet again failed. And third, you demoralized the police forces and you withdrew the cases only for political gains. And I would say that's another failure. The day Mr. Siddharamaiah would muster the courage to answer the questions that I have raised from these platforms, I am surely going to answer every question that Mr. Siddharamaiah raises. Thank you. Thank you everyone for the press conference. For coming, it's